Hi friends, how are you all? I hope you all are doing well. First of all, Happy New Year to all of you. Best wishes for you and your families. So, in this new year, I have decided that I will be making some videos on web development because I have seen a lot of people they are struggling to develop this skill of web development. Although there are a lot of sources available on internet via YouTube's channels, various pages, vlogs. But the real essence, that is the guidance, that is missing. So I will be guiding you as a big brother here about web development. First of all, let me introduce myself. I am Sanjeev and I have 10 years plus IT experience in IT industry, working across various projects in government as well as private sector. So if I come on web development, it is very necessary whenever we are starting any to develop any skill. So we have to learn from the basics. What is the basics of web development? If I divide it into two parts, that is front end development and the back end development. Front end development, as the name also suggests, that whatever you see in the front side, in the client side, that is the front end web development. That is made, whatever you see in your browser, that is made using HTML, CSS, JavaScript. These are the basic technologies which are being used on the front end development. Later on, as we will advance, we will also learn about back end development, where various databases, applications, and application logic, other technologies are used on the server side to manage the web pages, web interfaces from the backend. So this is the journey, this is the path that we all have to cover together. So are you ready for it? If you are ready, press the like button, give a thumbs in comment, and see you in the next video. अरे भाइयों, हमने पिछले वीडियो में वेब डेवलपमेंट की श्रृंखला में हमने देखा कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, कितने तरीके के वेब डेवलपमेंट होते हैं। मुझे विश्वास है आपको फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट जानने के बाद ये जिज्ञासा जरूर हुई होगी कि क्या हम बैक एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं बिना फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखे हुए। तो इसका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं बैक एंड डेवलपमेंट स्टार्ट। पर मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट पहले सीख लेते हैं तो आपको वेब डेवलपमेंट की और विस्तृत जानकारी लेने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है और कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो चीज़ होती है जो एक यूज़र को, जो एक वेब पेज खोल रहा है, एक वेबसाइट खोल रहा है, उस यूज़र को डायरेक्टली जो दिख रहा है, डेट इज़ द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। उसके ब्राउज़र में जो भी उसका डिज़ाइन दिख रहा है, लेआउट दिख रहा है, उसमें बटन्स हैं, नेविगेशंस है। आई नो ये और बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये हम आगे जानेंगे इसके बारे में, तो आपको और ज़्यादा इसके बारे में क्लैरिटी आएगी। तो कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो बेसिकली हम तीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मिनिमम तीन टेक्नोलॉजी तो इसमें होती ही है। जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज़ HTML। HTML मतलब उसका बाहर का स्ट्रक्चर, जो भी वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर बाहर का कैसा है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, कैसी हेडिंग है, पैराग्राफ है, उसमें इमेज लगाना है या कोई दूसरे पेज को लिंक देना है, तो ये सारा काम हम HTML के माध्यम से करते हैं। HTML में टैग्स होते हैं, एक क्लोजिंग टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में शुरुआत से अच्छे से पढ़ेंगे।
दूसरा होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट मतलब CSS। इसका मतलब जो भी हमारा दिख रहा है, जो भी उसकी सुंदरता है उस पेज की, जो उसके लेआउट का डिज़ाइन है पेज का, उसका कलर का, उसके फॉन्ट का, उसका स्पेसिंग देना है, किस जगह पोजीशन करना है पेज में, ये सारा काम हम CSS के माध्यम से बखूबी कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको CSS सीखना पड़ेगा। अगली टेक्नोलॉजी जो होती है उसको हम जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं, JS भी बोलते हैं, जिसका फाइल एक्सटेंशन .js भी होता है। इससे अपने वेब पेज जो कि एक स्टेटिक है उसको थोड़ा डायनेमिक फीचर मिलते हैं। जैसे हम लोग स्लाइडर होता है या कोई फॉर्म क्लिक करते हैं या कोई एनिमेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें जो भी होते हैं, जो भी उसमें लॉजिक अप्लाई करते हैं हम लोग, वो जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से बखूबी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कई सारे टूल्स और लाइब्रेरीज होती हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनमें प्री बिल्ड्स होते हैं और उसमें हम कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, Vue.js हो गया। इनके माध्यम से हम लोग अलग अलग वेब पेज में और ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ CSS के प्री प्रोसेसर्स भी होते हैं, उन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें एफिशिएंट स्टाइलिंग होती है। CSS से भी अच्छी और स्टाइलिंग होती है। ये एक तरीके की स्क्रिप्टिंग होती है। जो वेब पेज प्रोसेस हो रहा है उससे पहले की स्क्रिप्ट होकर फिर उसका स्टाइलिंग होता है, जैसे कि SAS या LESS। कई सारे बिल्ड टूल्स भी, जैसे गिट, तो ये क्या करता है, जो भी अपने वेब पेज में चेंजेस हो रहे हैं उसको मैनेज करता है और ट्रैक करता है। सो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मकसद क्या है? अपना फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मकसद यही है कि हमें जो यूज़र को हम अपना पेज प्रोजेक्ट करवा रहे हैं ब्राउज़र पे, वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। उसको बिल्कुल आसानी होनी चाहिए उसको समझने में, और वो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। रेस्पॉन्सिव मतलब ये होता है कि चाहे आजकल हम लोग वैरायटी ऑफ डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिनका डिस्प्ले साइजेस अलग अलग होता है। कोई मोबाइल होता है, कोई टैब होता है थोड़ा बड़ा, तो लैपटॉप होता है या टी होता है। तो ये सब अलग डिस्प्ले से हम लोग अलग पेज को डिज़ाइन, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को हमें ध्यान रखते हुए अपना डेवलपमेंट फोकस करना है। तो हम देखते हैं कि हमारा इस श्रृंखला में रोड मैप रहने वाला है डेवलपमेंट में। तो अपना रोड मैप स्टार्टिंग जो जर्नी करेंगे HTML से, उसके बाद हम CSS की तरफ और JS और फिर आगे हुए बूटस्ट्रैप या दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेंगे। तो मेरा से आग्रह यही रहेगा कि आप HTML से बात कीजिए। एक बार आपको HTML की क्लैरिटी आ गई तो आपको आगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने में बहुत ही आसानी होगी। इसका उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो घर में हम सबसे पहले उसका फाउंडेशन बनाते हैं, उसकी दीवारें बनाते हैं, उसके कॉलम बनाते हैं, तो उसके बाद हम कमरे बनाते हैं, उसमें पार्टीशन करते हैं। सो दिस इज़ नथिंग, ये कुछ नहीं है, ये एक HTML की तरह ही। जैसे कोई पेज बनाते हैं तो उस पेज में हम लेआउट बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कहाँ पे हेडिंग होगी, कहाँ पे पैराग्राफ होगा, कहाँ पे इमेज लगानी है हमें, कहाँ पे अपना वीडियो दिखाना है। सो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी वेब पेज का, वो हम HTML के माध्यम से बनाएंगे। फिर उसके आगे बढ़ते हुए जब हमारा घर का बेसिक ढांचा तैयार हो जाता है, तब हम उसमें रंगाई पोतन करते हैं। उसको और अच्छा बनाने के लिए हम अलग अलग उसमें डेकोरेशन करते हैं, कहीं इमेज की छोटा करते हैं, कहीं बड़ा करते हैं, कहीं पे हम हेडिंग को या वीडियो को कंट्रोल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम CSS के माध्यम से करते हैं। जो भी अपीयरेंस या कलर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारा हम लोग CSS के माध्यम से करते हैं। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जैसे घर का उदाहरण दिया मैंने, कि अगर हम स्विच ऑन करते हैं फैन को या अपनी लाइट को, तो कमरे में बल्ब से रोशनी आ जाती है, बंद कर देते हैं रोशनी चली जाती है। तो ये स्विच ऑन ऑफ करने से जो बल्ब जलता है बुझता है, इस तरीके की तकनीक का जो यूज़ करके वेब पेज में हम कोई चेंजेस करते हैं, तो उसको हम जावास्क्रिप्ट के माध्यम से करते हैं। अगला आगे चल के बूटस्ट्रैप भी है टेक्नोलॉजी, जो बूटस्ट्रैप हमें सीखना ज़रूरी है क्योंकि उससे रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन और प्री बिल्ड लाइब्रेरीज हैं जिसमें CSS और प्री बिल्ड और जावास्क्रिप्ट प्री बिल्ड है, उसका प्रयोग करके हम अपने वेब पेज को और भी ज़्यादा अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। उसके आगे React.js भी है, SAS है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, जो प्री बिल्ट फ्रेमवर्क्स हैं, और Angular.js है। सो ये सारे फ्रेमवर्क सीखने के लिए आपको वक्त लगेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, बट पहले बेसिक डेवलपमेंट में आपको कम से कम HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS, इन तीनों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा।
अगले वीडियो में मिलते हैं, हम लोग HTML से शुरुआत करेंगे अपने इस वेब डेवलपमेंट की श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद। Hi friends, how are you all? I hope you all are fine and ready with full josh to learn web development. In the last few videos, we were discussing about web development, front end development, back end development. We also learned about various technologies. But later on, I realized we are missing the basic fundamental. That is the client server architecture. Being a web developer, we must know what is the basic client server architecture. Client is any machine that is capable of getting information over internet. So if a machine is able to get information or any resource from internet, we call it client. This clients may be your PC, it may be your laptop, it may be your mobile devices. So it can be anything that is capable of getting information over the internet is client. And the other machine is server. Server is basically a machine that is capable of sharing information or sharing resources over internet. So these are high powered computers, the servers, and they are capable of sharing the information or resources. So now the term comes, what is web or what is web? So web is basically World Wide Web. In the short form we call the web. It is World Wide Web. World Wide Web is a system of interconnected resources, that is documents, that files, images, videos or applications, and it is shared, it is interconnected by various means. So this World Wide Web, and these information can be accessed by means of various browsers, web browsers. There are web browsers, Firefox, Google Chrome and all. So I will discuss in the next slide about it. What is web service? This server, what we are seeing here, it is actually capable of providing a service to these clients, and the laptop may be mobile, or it may be your PCs or any other device that is capable of getting information from server. So it is providing a service, and there are mainly two common type of service, that is SOAP and REST. SOAP is simple object access protocol. Protocol means it is a set of rules. So there are some set of rules which are structured by means of which the data or messages can be shared across various internet devices. So the two common types of web services are SOAP or REST. REST is representational state transfer. REST, as you also may be knowing if you have learned about this, get, post, put and delete. Don't worry, we will learn it about in the JavaScript and we will devise the functions and all. We will learn about it. So there are JSON. JSON is used in the REST for data exchange. So this server is capable of web services. Now if the server is providing the web service, how the clients can access the data over the web service? That can be done by means of web browsers. As we know, there are various web browsers in the market depending on the basic architecture on which they are. Like in Safari, it is the basic browser of Apple. Apple is providing software, this application to access web service, and it is working on macOS and iOS. These are the operating system on which these browsers are working. Likewise, Firefox is by Mozilla company. It is running on almost all OS, like Mac OS, Windows, Linux, or Android OS. So, like there are various Edge, and there are just other browsers in the market. But these are some browsers you have. These browsers are pushed to access the web service on the client side. So, if this browser is called in a system, how can information? How can access our files? So that we have to open this browser and
The browser, suppose this is a Google, this will be the dashboard, initial dashboard, and this is bar top. It is address bar. Add is like you have to your relatives or to some office where mail you something. Like that accessories or videos we have address bar where will be getting address on that particular server, and from there on we can get information. So what is the as it is not like you type anything over here. There is some rules to write over here how you have to type this web address. This web address is also known as Uniform Resource Locator. It is URL. It is a location of a specific resource on web. Where the web is lying, that resource is lying on web, that address you have to write over there. So you can see it is https://www.google.com/web any whenever you are seeing any page on web browser, you will find this address. Without this address, no resource can be accessed on web browser. So now we will see what are the parts or what are the components of this web address. What is the structure of it? So you can see HTTPS. HTTPS is basically the protocol. HTTP or HTTPS. In HTTP we are using the port number 80, and in HTTPS we are using the port number 443. So these are two kind of protocols. These are some standards that we are using. S stand for secure HTTP. The secure version of HTTP is HTTPS. Then we will write the domain name like www.google.com, or here you can see blog.bytego.com. So likewise, you write your domain name. Domain name comprises of domain name, top domain name, top level domain name, domain name. Then it is also sometimes comprising of that geographical domain also, like google.co.in. So in I stand for geographical domain. Thereafter we are writing the port. This port is basically the port from which the web server is providing the web service. So sometimes the port is also need to be defined for that web server. Then there is the path of that file, where the file is located. Thereafter this, when you see the question mark here, this question mark is query string with a parameter. Always have a parameter. Whenever there will be the query string, there will be some parameters, some information that we are passing to that page on the web server. Like we are asking here for underscore source equal to menu. This parameter is being passed to the web page, and at the end, that is nowhere. It is the specific part of that page. It is, suppose there is a specific part at the bottom or anywhere, so that will be defined by means of fragments. Parameters and these segments, these are optional. It is, you will not find like every time these are being used, but that protocol, domain name or port, if it is there, so that has to be written in web browser in that bar to access the web service. So I thought this is very important to build up your fundamentals, know about it. So that's why I come up with this video, wherein we are understanding this basic client and server architecture, how this web service is working. In the next video, we will be learning about the HTML part. We will be starting with HTML. Till then, thank you. Bye bye. Take care. You don't learn to walk by following rules. You learn by doing and by following over. I welcome you all with these beautiful lines from Richard Branson, and I hope you enjoy.
enjoyed the last lecture and practiced a lot and are ready for the next lecture in a stable series of web development. Friends, in today's lecture we will see about HTML headings. I told you in the last lecture also that there are 6 categories in which you can display the headings in a web page by means of h1, h2, h3, h4, h5, h6 tags. So these are tags that have various sizes. H1 is the biggest of all. So if you have to define a heading that is of a considerable large size, you would be using the h1 tag, and h6 being the smallest of them. So now we will see how it is. So it is like this. When you will write this code in your notepad and you will save it as a .html, so you will see the result. Here h1 tag is heading and it is heading number 1, right? So are you getting it? In this h1 you will find the size of this is large comparatively to h6, h5, s2. So these are varying size. So if you have to use a heading in your HTML content, so likewise you have to define the headings. So browser automatically adds a white space before and after heading. So you also need to remember it is a very small thing, but if you are groomed as a developer, you will remember always that whenever we are using the h1 or h2 or h3 any heading tags, so another line will be added by its own by the browser. It automatically adds a line. It's not like that heading 1 will just stop there and thereafter itself the heading 2 will start. It will always start in the next line, right? Headings are important. Why is it important? Because whatever you are trying to display in web page, there would be a heading, there will be pages and all. Anything can be there, but headings will show you what is the document structure, right? What is it about? So h1 means it will be used for main headings, and if the lesser important heading is required, then you can use h2, h3, h4 likewise. So HTML headings are used only for headings and it should not be used for making a text big or bold. Suppose you want to write some text to make it big or bold, so you will not use h1 or heading tags until and unless it is a kind of headings, because whatever is meant in HTML you have to use it for that purpose only. Or if you will use it will, but be a good developer, always make it a practice that what it is meant for that only you have to use it. Bigger headings, if you want to use headings, you can use the style attribute. For the style attributes, we would be studying about style attributes in next sections. So here you will write this style equal to font size is 60 pixels. So this attribute would be used by you rather than using that h1, h2, h3. This style attribute if you will apply, so it will make your headings in bigger fonts, right? Are you getting my point? I hope you are getting it. Now we will see about the next thing. Now we will learn about HTML paragraphs. So in a content, whatever we are writing in a page, there is heading, there is also paragraph. So a paragraph will always start on a new line. It is not like if you are using heading and in the same code, in the same line you are writing a paragraph. So it will not start with the heading. The paragraph will always start on a new line and is a block of text. It is simply a block of text. The paragraph browser will automatically add some white space before and after and of a paragraph, like in headings. So that will be done by the browser itself. Like in this is a paragraph, this is a paragraph, this is a paragraph. Now if you are writing the code like this, you can see a white space, a line is being added here, and if you try to remove it, right, you remove this p tag, then you will find that this line would be removed by itself. Now you can see the paragraph, this has been a complete paragraph. This from here to here, it is a complete paragraph now, right? This is a complete paragraph. Now you can see it. Now we will see display, like HTML display. Whatever you write in paragraph or heading, the HTML is not capable of displaying according to the display sizes. Like suppose you are using small screen, mobile screen, or you are using big TV or big displays.
So resize windows will create different results. So HTML cannot change the display on its own. For that we will see in the later videos about Bootstrap where the responsive design would be there. So the browser will automatically remove extra spacing lines when the page is displayed. So you can see here this paragraph is written. So it will not be like here in the code you see that this paragraph contains a lot of lines in the source code. These everything is written in underline coding. But whenever it will be displayed, it will display a single paragraph. Right? There will not be any extra line here. Let us see it. Here, see the whole thing from here to